everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm going to do inspired makeup look again. So in today's video, I'm going to do Meryem Uzerli inspired makeup look. And this is also requested video and this is requested by Sumaya Kabir. अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए पॉज लेनी चाहूँगी क्योंकि शरीन अख्तर ऑल्सो डिड कमेंट, बट आई एम सॉरी शरीन, आपने जब कमेंट किया था तब उससे पहले ही ये वीडियो ऑलरेडी फिल्म हो चुकी थी. बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू अनदर वीडियो जहाँ पे मैं हरीम सुल्तान लुक भी ट्राई करनी चाहूँगी. एंड थैंक यू सो मच सुमाया एंड शरीन, both of you, and do more comments like this. This I love to read. And also Sumaya, if you are on Instagram, then please do follow me on Instagram. And for those of you who don't know who is Meryem Uzerli, she is also a Turkish actress like Hande Erçel. Most of you know Hande Erçel as Hayat, and I did that look already. So without wasting much of time, let's quickly jump into the video. But before that, I want to share something. In today's video, I am going to do two look of Meryem Uzerli. So this video is slightly long, but I hope you will enjoy. So let's get started. फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल क्योंकि कोलकाता में इतनी ज़्यादा गर्मी है आजकल. सो आई डोंट वांट ग्रीजीनेस ऑन माय स्किन. दैट्स व्हाई आई लाइक टू अप्लाई समथिंग विद जेल कंसिस्टेंसी मोर देन एनी मॉइस्चराइजर. नेक्स्ट आई एम यूजिंग हियर मिस क्लेयर स्टूडियो परफेक्ट प्रोफेशनल मेकअप प्राइमर. Then I am using MAC Prep Plus Prime Natural Radiance Base Illuminator. With this illuminator, I am focusing on high points of my face. Next, I am going to spray MAC Prep and Prime all over my face. And as you can see, my skin is super shiny and it's ready to apply foundation. Foundation that I'm using L'Oreal Paris Infallible Foundation in the shade 105 Natural Beige. जनरली अगर मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तो वन कोट फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, पर इस लुक के लिए मुझे एक फ्लॉलेस बेस चाहिए थी. एंड ऑल्सो दिस फाउंडेशन इज़ नॉट फुल कवरेज फाउंडेशन, सो आई नीड अ डबल लेयर ऑफ फाउंडेशन. दिस इज मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड मीडियम, और इसको हमें यूज़ कर लेना है अंडर आई, आउटर कॉर्नर ऑफ आई, इनर कॉर्नर ऑफ आई, एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑन माई forehead because of acne marks that I have, and also little bit on mouth area and nose area. For another layer of concealer, here I am using Photo Focus Concealer by Wet n Wild in the shade Moyan. This is a lighter shade concealer to highlight my under eye and bridge of my nose, chin and forehead. With some loose powder, I am setting my under eye area only, not full face, because क्योंकि इसके बाद मैं करने वाली हूँ क्रीम कॉन्टोर. तो यहाँ पे मैंने कॉन्टोर स्टिक लिया है बाय के ब्यूटी इन द शेड कोको फोकस. मैंने नोटिस किया है तुर्किश फेशियल फीचर्स आर रियली शार्प, लाइक नोज, चिन एट्सेट्रा, एंड दे हैज ऑल्सो रियली बिग आईज. दे आर रियली वेरी ब्यूटिफुल, but I have small face and very small eyes, so I try to make my features sharp through contouring. देखते हैं कितना कर पाते हैं. Now I'm gonna use this MAC Studio Fix Compact Powder in the shade NC30 to set my entire face. Today I'm going to use this palette. This is by You Can Be Pretty All Set and it is a huge color palette. और इस पैलेट में आई शेडो के साथ साथ कॉन्टोर, हाइलाइटर एंड ब्लश भी है. तो मैं आज ये कॉन्टोर कलर को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कॉन्टोर कलर काफ़ी लाइट है, तो इसे एज ब्राउन्सर यूज़ किया जा सकता है. Now I'm taking this blusher from that same palette. This is a perfect shade of blush for this look.
Then with the fixer I set my entire face, and this is by Miss Claire. After setting my face, I move on to my eyebrow, and this is a eyebrow pomade by PAC in the shade 02 Cedar Cream. I use this pomade because I have very thin eyebrows. You can replace this pomade with brow mascara. In this look, Meryum has just normal brush effect casual eyebrows, so I think ज़्यादा effort डालने की ज़रूरत नहीं है eyebrow के लिए. So next, as a shadow base, I am using a little bit concealer on my eyelid. For my eyeshadow, I use that same palette. तो मुझे बिल्कुल ऐसी आई क्रिएट करनी है. So let's see कितना कर पाते हैं. First I take a brown eyeshadow and then I use it on my crease area, and then I drag it a little bit on my outer corner. देन मैं इस पैलेट को यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ गॉर्जियस मी पैलेट बाय ब्यूटी ग्लेज. विथ मिक्सिंग दिस टू शेड्स मैंने आउटर कॉर्नर पे एक लाइन क्रिएट करने की कोशिश की है. एंड देन आई टेक दिस लाइट ब्राउन शेड, एंड विद दिस शेड मैंने इनर कॉर्नर एंड क्रीज एरिया के साथ नोज़ को कनेक्ट करने की कोशिश की है ताकि एक अच्छा सा शेप मिले. एंड इन माई लोअर वाटर लाइन आई एम यूजिंग दिस न्यूड आई पेंसिल. फॉर माई लोअर लैश लाइन आई मिक्स दिस टू शेड एंड अप्लाई. एंड मैंने उसके बाद सेम शेड को अपर लैश लाइन में भी यूज़ किया है. Now I take this same blush shade which I used on my cheek, but this time I am using this blush on my eye. क्योंकि मुझे सेम शेड मैच करनी थी तो मैंने इसको एज आई शेडो यूज़ किया है. नेक्स्ट है हाइलाइटर, एंड दिस हाइलाइटर इज़ बाय वेट एंड वाइल्ड and in the shade Precious Petal. But before that I spray some MAC Prep and Prime, and then I'll use this highlighter. Then I wear Miss Claire lashes with this PAC glue. Then I use this colossal mascara by Maybelline and coat my lashes very well. उसके बाद मैंने लिया है लिप लाइनर. दिस लिप लाइनर इज़ बाय मिस क्लेयर इन द शेड स्नो पिंक. Then I use this retro matte liquid lip color by MAC in the shade So Me. लिप लाइनर के ऊपर मैंने इसको अप्लाई किया है टू मेक माई लिप लाइनर मोर प्रोमिनेंट. उसके बाद आई हैव एवॉन लिपस्टिक. बहुत पुराना है तो मुझे इसकी शेड नंबर भी नहीं पता है, और लिपस्टिक में भी कहीं पर मेंशन नहीं है कौन सी शेड है, तो आई कांट टेल यू विच शेड इट इज़, बट आई एम श्योर मार्केट में ऐसी शेड बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल होगी. Then I use some lip gloss, and this is by Nykaa in the shade Honey Boo. And here is the first look. सेकेंड लुक में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस आई शेडो, आई लाइनर एंड हेयर स्टाइल चेंज है. क्योंकि मैं यहाँ पर हेयर स्टाइल नहीं दिखा रही हूँ तो हेयर स्टाइल को प्लीज़ फोकस ना करें. बाकी जो मेकअप में है वो मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ. यहाँ पर आई लिड में मैंने थोड़ा सा कंसीलर यूज़ किया है टू चेंज द कलर ऑफ आई शेडो. तो सेकेंड लुक के लिए मुझे थोड़ी सी वायलेट पिंक शेड चाहिए थी, सो आई यूज़ दिस शेड ऑन माई आई लिड.
After apply the pink shadow, I blend it with a clear brush. और उसके बाद मैंने ब्राउ बोन में थोड़ा सा कंसीलर यूज़ किया ताकि हाइलाइटर जो है मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि पहले गोल्डन हाइलाइटर थी और अभी मुझे सिल्वर हाइलाइटर यूज़ करनी थी। एंड द लास्ट थिंग, eyeliner. दिस इज़ कोलोसल eyeliner बाय Maybelline एंड यहाँ पे मैंने बार बार फ़ोटो को देख के सही से विंग क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि कभी भी मुझसे सेम विंग दोनों आइज़ पे सही से नहीं बन पाती है, पर मैंने ट्राई किया है एंड आई थिंक अच्छा ही बना है। एंड हियर इज़ द सेकंड लुक। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई नो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो सकती है। अगर आपको कहीं पर भी लगता हो ऐसा कि कुछ चीज़ें अगर मैं ऐड करती तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर कोई चीज़ स्किप कर जाती तो अच्छा होता, नहीं करनी चाहिए थी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एवरीथिंग। And thank you so much for watching, and please share this video and like this video, and see you in my next video. Bye.